morning, students. So today I'll be I'll be asking you people to share your screen and show me what is the development in the second practical. Okay, so till where you all have completed, please let me know. So the steps or the process for the second experiment, what we are doing, as you must have noticed, is quite lengthy. Okay, so we are doing it in parts by part because that is taking time to complete. So we started with, so I'll quickly revise what we have done till now. So the first step was to download VirtualBox on your system. Okay. Why VirtualBox is required? That is the hypervisor. What do you mean by hypervisor? That is a software which will help us to create virtual machines and which will help us to generate the virtual environment on the existing operating system. And when we use VirtualBox, okay, we are since it is a software, we are installing it on one operating system, right? So that is why the process or the technique what we are using is your hosted virtualization, right? That is your type 2 virtualization what we are performing in the second practical. Now after installing VirtualBox, what we did, we created one virtual machine. Okay, so what virtual machine did we create? We created Ubuntu virtual machine, and for that we required the ISO file which we downloaded online. So either Ubuntu 8.04 or 20.04 you must have downloaded. So using that, whatever were the necessary machine configuration, size of RAM, size of memory, all those things were configured, and we downloaded and we set up the virtual machine for Ubuntu operating system, right? After that was done, जब Ubuntu properly install हुआ, I know that will take time because काफी बड़ा operating system है, so it needs time to install, and especially we are installing that in the virtual environment. ठीक है? So if you feel that the things are not processing, अगर आपको output मिलने में थोड़ा time लगेगा because it is little slow since it is working on the virtual platform. But then yeah, so after your Ubuntu is installed properly, what we have to do, so that means basically what we have done, we have created one Ubuntu virtual machine using the VirtualBox hypervisor, right? So, wait a minute. Just a minute. So basically what we have done, so now our Ubuntu system is ready. Okay, so we have, say for example, आपके पास Windows था, Windows OS. So on top of this particular patch, you have your hypervisor, that is your VirtualBox. Okay, now on this hypervisor, we have created one virtual machine. So you can create multiple virtual machines here, right, on top of the hypervisor. So we have created our first instance of virtual machine, which is Ubuntu. अभी हमें क्या करना है? So now that is what we were trying to do yesterday.
Now on this virtual machine, we are trying to install Kemu. Okay, ये क्या है? ये भी एक तरह का hypervisor है. Okay, so basically we are trying to learn or we are trying to achieve nested virtualization. तो ये Kemu क्या करेगा? Since it is also one layer of hypervisor, using this again, we will be able to create one more virtual machine inside this particular environment or in on this particular platform. So this is what we are trying to do, and this is your virtual machine 2. Okay, again this can be any ISO which you people feel like. Okay, so this is what we are doing. So till here we have almost finished. Last का 2-3 steps बचा हुआ है, and after this is done we will try to do this. Okay, so hopefully आज हमारा second practical complete हो जाएगा. Now just start your virtual box. Okay, virtual box के अंदर अपना Ubuntu start करो. Somehow it is not starting in my machine. Just check आपका ठीक से start हो रहा है कि नहीं हो रहा है. We need to have all the steps what we had done till yesterday. वो सारी steps आपकी होनी चाहिए वहाँ पे. Otherwise we will have to restart again from scratch. So quickly start your Ubuntu on your virtual box, everyone. I hope everyone is working. And today randomly I'll be calling out names and I'll ask you people to share your screen. I want to see whether you people are working or not working. So everyone please start your VM instance. Is your VM working? Yes, roll number 73, Simran Singh, are you there? Roll number 73. Roll number 19. Roll number 19, Sumati. Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. Roll number 65. I will be removing students who are not replying. Roll number 2, Vineet, are you there? Yes, ma'am. Yeah, can you please share your screen and show me what all the things you have done? Yeah, ma'am. I was about to ask you about step 3 only. What happened? Where are you stuck? I'm adding the user and just a second, ma'am. I'll share the screen. Yeah.
Ma'am, can you Yes, it's loading. ma'am, can you see my screen? What happened here? I'm on third step of creating user, uh, and now it's asking me for creating a new password. So you can put any password. No, this is for the CCL user. So हर हर it एक is not the हाँ old password I used while creating यू installing कैन Ubuntu. कीप सी यहाँ पर तुम एक नया यूजर बना रहे हो जैसे हम लोग मतलब मल्टीपल लॉगिन्स के लिए जैसे तुमने पहले एक यूजर बनाया होगा राइट उसका अपना एक पासवर्ड था तुम यहाँ पर नया यूजर बना रहे हो तो यू कैन कीप अ न्यू पासवर्ड और द ओल्ड पासवर्ड एज वेल नॉट अ प्रॉब्लम इट इज जस्ट आस्किंग यू फॉर अ पासवर्ड फॉर दिस रिस्पेक्टिव यूजर Okay, ma'am. सो यू कैन पुट एनी पासवर्ड इफ यू कीप सेम इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर अदरवाइज आपको कौन से यूजर का क्या पासवर्ड था वो याद रखना पड़ेगा Ma'am, because I'm not able to see, I'm little confused what I have entered here. अरे कुछ इजी डालना 1 2 3 4 या ABCD ऐसे तो प्रॉपर पासवर्ड डालने की थोड़ी जरूरत है it's okay even if it is wrong it will give you error it will ask you to put try again say yes okay put something simple which you will remember this you can skip this you can skip just press enter skip this yes okay so this is done right अभी आपको क्या करना है you have to log out so एक काम कर यहाँ पे exit लिख मैम ये वाला नहीं करना स्टेप, कौन सा ये वाला अच्छा ये कमांड। किया नहीं क्या सॉरी हाँ ये करो Ma'am, all these steps you have to perform in the root user, right? no after this you can start with the root user So you're not supposed to be in the CCL user. CCL ये तो अभी क्रिएट कर रहा है ना आई थिंक No, यू हैव कंप्लीटेड दैट स्टेप ये तो अभी कौन है ये विनीत ही इज जस्ट नाउ क्रिएटिंग द okay, यूजर okay, इसके okay. बाद ही विल लॉग इन टू CCL yes now what you have to do you have to log out and log back in as CCL ठीक है so exit करो यहाँ पे and just see हाँ ओके so तुम्हारा टर्मिनल बंद हो गया ना स्टार्ट द टर्मिनल अगेन ये रिमाइंड मी लेटर करो हाँ तो यहाँ पे यू विल हैव टू लॉग इन एज CCL एक काम करो 1 सेकेंड SU स्पेस CCL लिखो Am I right? हाँ एंटर करो पुट द CCL पासवर्ड ओके but now I think you will require the this तो वो PDF ओपन करना स्क्रीनशॉट के साथ वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है do one thing sudo su लिखो यहाँ पे sudo space su yeah hit enter put the password for CCL CCL is not in. अच्छा ओके 1 मिनट ये कैसे किया था हमने मैं भूल गई 1 मिनट हाँ एग्जिट कर वापस या नाउ राइट sudo su विनीत वाला पासवर्ड डालना ठीक है पहले यूजर वाला हाँ नाउ you have to go to CCL ना अभी लिखो SU space CCL अरे यार नहीं सॉरी we want root access for CCL 1 minute just let me check open that video जो मैंने बनाया था उसमें एक बार चेक कर पार्ट 2 में एक बार देख
How did I change? My Ubuntu is not starting somehow. So मैम सीडी रूट yes. करके आ जाएगा, सीडी 2 dots. अच्छा पीछे जाकर ना. Okay, go back to Ubuntu. Okay, you have to and then ls करके you have to insert in that folder, right? That user Then folder. cd ccl. हाँ correct. Go to your VM. उसको pause करते. Go to VM. Yeah. एक काम कर sudo su करो वापस. Become the root user. हाँ. No, sorry. Exit करो. Vineet में तुमको sudo su करना है because CCL is not the root user ना. Vineet is the root user. Yeah. Exit कर. हाँ, wait. CD space dot dot करो. CD space dot dot. Right. हाँ, enter. ls कर ls. हाँ, CCL. CD space CCL. CD. हाँ, change directory. CD stand for change directory. हाँ, enter. Yes. Now run that command. Next step वाला. Step number 4 वाला. एक काम कर पहले वो PDF ओपन करते lab 2 PDF. Just see the screenshot. I just want to see that are we on the correct path. नीचे जाओ. एक path वाला screenshot होगा. नीचे जाओ. Wait. हाँ wait. यहाँ पे just check. So it is root @ubuntu home pset. हाँ ठीक है. यही ऐसे ही करना था. ठीक है. Now run this command. VIRS 4th step वाला. ये वाला ना मैम. हाँ. Other students, are you working? मैंने जैसे ही बोला कि I'll be checking your execution, so many people left. This is not how you work, no? You are in third year engineering. You have paid your college fees. You should be responsible enough, no? सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठते हो क्या आप यहाँ पे? मैम कमांड विश नॉट फाउंड. VIRS भाई. वृष नहीं है वो. VIRS. सॉरी. हाँ. सिस्टम. मैम यस. मैम वो जो लाइक लास्ट में जो सेकेंड ओएस की आईएसओ फाइल जो डाउनलोड की थी ना मैम उस वीडियो में मैम वो 409 MB की हाँ. मैम. सो फिर वो लाइक मैं सेकेंड इसमें मैं सेटअप करता हूँ ना मैम. सो लाइक वो वर्चुअल मशीन तो क्रिएट हो जाती है और जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना मैम सो जो वर्चुअल मशीन में वो ओएस जो लोड होने को स्टार्ट होती है ना मैम तो वहाँ पे मेरा जो उबुंटू रहता है ना मैम वो हैंग हो जाता है मैम पूरा और फिर लाइक वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता. VM के अंदर बात कर रहे हो तो? यस मैम. मैम मेरे साथ भी यही होता है मैम मतलब वो मींस वो हाँ लोड मैम. ज्यादा हो रहा होगा. लोड ज्यादा बिकॉज सी हमने क्या कि हमने ट्रिपल लेयर बना लिया ना यार. अपना यस अपना मैम. रैम है. ठीक है. अगर सपोज तुम 4 GB के मशीन पे काम कर रहे हो. 4 GB के मशीन के ऊपर तूने वर्चुअल बॉक्स डाला. वर्चुअल बॉक्स के अंदर तूने उबुंटू डाला. वापस उबुंटू के ऊपर तूने केमू डाला. केमू के ऊपर वापस एक आईएसओ करने की कोशिश कर रहे हो. तो दैट इज वाई जो तेरा कोर प्रोसेसर है ओके दैट इज गेटिंग वेरी लाइक उसके ऊपर काफी बर्डन आ रहा है ना. मैम बट So see, मैंने उसको हाँ. सफिशिएंट रैम दिया था लाइक वर्चुअल वे मशीन को भी वर्चुअल लाइक मशीन 4 में GB को हाँ रैम दिया था उसको. वर्चुअल मशीन में सफिशिएंट रैम दे रहे हो बट देन दैट इज स्टिल मतलब वो एक क्या कहते हैं इट्स लाइक हाइपोथेटिकल नो. एक्चुअली तो 4 GB बना नहीं है ना तेरा. यस मैम. अंडरस्टैंडिंग गेटिंग माय पॉइंट. यस मैम. यू आर जस्ट डूइंग द थिंग्स वर्चुअली. तुम लाइक वो एनवायरनमेंट एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो बट वो एक्चुअली तूने 4 GB का रैम इंस्टॉल किया है क्या? नहीं ना. दैट इज फेचिंग समथिंग फ्रॉम योर कोर मशीन जो तेरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है. ओके उसके जो अंडरलाइंड हार्डवेयर है वहीं से यू नो द थिंग्स आर गेटिंग फेच्ड फॉर द टाइम बीइंग राइट. Okay, ma'am. What 1 second Vinit, what happened? Ma'am, I did the fourth step Yeah. and the output came here. हाँ. But after that, I wrote the fifth command
Word हाँ, dash man hyperspace manager, इसके and then बाद तुम्हारा वो एक यूआई स्टार्ट होना चाहिए. वर्क मैनेजर नॉट फाउंड बोल रही है. हाँ, हाँ, इंस्टॉल करो ना इसे. you'll have to install it. So basically न्यू वर्क टर्मिनल से इंस्टॉल करना पड़ेगा ये. क्यों रूट इंटरनेट होगा. रूट लगेगा रूट एक्सेस के लिए. रूट है ना, ये हैश है तो रूट है ना. जस्ट चेक होता है क्या. मैम सो फिर वो मतलब वो मीन्स हाँ वो बोलो. लास्ट में वो ओएस See, इंस्टॉलेशन listen. स्टेप तक ही फिर वो अगर फिर मेरा सी फॉर मी ऑल्सो अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहां पर आई इंस्टॉल्ड इट. ओके, बट जो वर्ड मैनेजर का फाइनल आउटपुट है, राइट, तो वहां पर इट इज नॉट रनिंग. इट वाज स्टिल इन द पॉज स्टेट. तो दैट इज ऑल्सो ओके. एटलीस्ट आपको ये पूरा प्रोसेस तो समझ में आ गया ना. यस मैम. इफ यू विल सी द पीडीएफ, जो ये सर का पीडीएफ है, भूषण सर का, उनका विनित नीचे स्क्रॉल कर. जस्ट ओपन दैट. नीचे स्क्रॉल कर ये पीडीएफ का. गो टू द लास्ट पेज ऑफ दिस पीडीएफ. या हाँ, सी. सो देखो, ये जो सर का आउटपुट आ रहा है, सर ने क्या किया, ये इसके अंदर विंडोज वापस डाला. ओके, एंड द स्टेट इज रनिंग. व्हेन आई ट्राइड डूइंग दैट, ये मेरा स्टेट पॉज आ रहा है. इट इज नॉट रनिंग इन माय केवीएम. ओके, यस बट मैम. स्टिल, सो दैट्स ओके. आई मीन मैम दैट इज ओके. मेरे एटलीस्ट वी इसमें बट अंडर. लाइक इस हाँ, स्टेप तक भी नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो पूरा उबुंटू मतलब ही फ्रीज मैम हो रहा हैंग है. हो जाता है ना मैम. सो लाइक मेरे ओके, को शट डाउन करना पड़ता है और जब मैं फिर से लाइक रीस्टार्ट करता हूँ तब that's वो okay, Avishka, not a problem. At least see, the whole concept of these cloud computing practicals is you should be aware of how the things are done. And now what we are doing and what resources we are using are very, like as I've told yesterday also, सबका अलग अलग configuration है. तो किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, right? And यस since मैम. all the more in the online environment, online classes में तुम अभी इतना कर रहे हो, that is also fine. So don't worry. अगर at least be sincere enough to execute and try the practicals. If you don't get the output, nobody is going to question you because you are using your own personal systems, right? So यस that's मैम. okay. So that's okay. Not a problem. But then yes, students. I forgot to tell you. आप लोगों ने screenshots लिए क्या? How will you do the submissions? So for the मैम वो for the फाइनल स्क्रीनशॉट नहीं आएगा बस. जो मैम फाइनल वो रनिंग मैम वाला मैम वो स्क्रीनशॉट है ना रनिंग का मैम वो स्क्रीनशॉट नहीं नहीं ले आएगा. सकते मैम. वो प्रॉब्लम इशू में वो प्रॉब्लम वो में that's नहीं हैंग ही आएगा. हो okay. जाते हैं. That's okay. उतना you उसके can take पहले तक का proper. मैम पूरा जो वर्चुअल हो का जाएगा मैम. क्रिएट किया ना मैम, वो स्क्रीनशॉट ले पाया मैम, बट उसके बाद हाँ, वाला कुछ नहीं ले पाया मैम. एक so whatever you couldn't do, you can take the screenshot from the document what I have provided. ओके But then मैम. आपके खुद के screenshot जो आपने process follow किया है वो भी करो. That will be required for the submission. Actually, यस I'm मैम. not visiting college, so I don't know what exactly the format has to be given for the submission file. तो इसीलिए मैंने आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का भी सबमिशन लिंक नहीं बनाया. नाउ योर सेकंड एक्सपेरिमेंट इज आल्सो ओवर. So once I get the format, then I'll ask you people to submit. But in the meantime, आप सारा material अपने पास ready करके रखो, ठीक है? Then when I get all the templates, then I'll ask you to start submitting your work. Okay? मैम Yes. स्क्रीनशॉट एग्जैक्टली किस किस चीज का लेना है? स्टेप्स जो जैसे तुम फॉलो डॉक्यूमेंट. जो तुम स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, जैसे वर्चुअल बॉक्स में अगर तुमने उबुंटू इंस्टॉल कर रहे हो तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आप एक दो स्क्रीनशॉट्स ले लो, राइट? देन जब आप वो स्टेप्स इंस्टॉल कर रहे हो, केवीएम इंस्टॉल कर रहे हो, उस टाइम पे यू कैन टेक 1 or 2 screenshots just to show that yes, you have worked on the practical. So it will be a proof that you have done that particular practical, executed that practical. That's it. ठीक है? Yes, Vineet. अभी इसके बाद क्या करना है? So this is, see everyone, look at the screen. So this is Word Manager, that is Virtual Manager, Virtual Machine Manager. ठीक है? तो जो हमने Virtual Box install किया ना इस पे Windows पे, so this is one more hypervisor KMove, which is a KVM का this flavor that we have installed on Ubuntu. Now did you understand जो मैं आपको ये बता रही थी, the diagram what I had shown you कि पहले Windows है, फिर Virtual Box है,
उसके ऊपर उबुंटू है, उसके ऊपर KVM है, राइट? सो नाउ दिस इज योर दिस पर्टिकुलर विंडो इज एक्चुअली योर हाइपरवाइजर, ठीक है? अब ये हाइपरवाइजर कहाँ पर प्रेजेंट है? ये उबुंटू में प्रेजेंट है। ये उबुंटू कहाँ पर है? ये उबुंटू इटसेल्फ इज अ वर्चुअल मशीन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन हियर। अब यहाँ पर आप वर्चुअल मशीन, एक सेकेंड, तुम क्या कर रहे हो इससे? व्हाई क्रिएटिंग स्नैपशॉट? सॉरी मैम। हाँ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? inside this virtual machine you will have to create one more virtual machine. तो इसके लिए आपको एक ISO फाइल लगेगा। So what you will do for this, open Firefox, यहाँ पे Ubuntu के अंदर एक Firefox ओपन करो। Yeah, and here you will require one ISO. अब ISO आप कौन सा इंस्टॉल करोगे? डोंट, हमें सिर्फ देखना है कि मशीन इंस्टॉल होती है कि नहीं होती है, राइट? सो यहाँ पर आप सर्च करो स्मॉल ISO या फिर पपी लिनक्स सर्च करो, PUPPY हाँ, पपी लिनक्स ISO। Why are we using this? Actually अभी जैसे अगर आप PDF में देखोगे, सर ने क्या किया था? विंडोज डाउनलोड किया था। Now Windows is already a very heavy software. हमें सिर्फ देखना है कि are we able to create one more VM inside this. So for only for that particular purpose we can install any ISO. तो Puppy Linux is a क्या कहते हैं, छोटा वर्जन है लिनक्स का, a small version. Okay, so डाउनलोड में जाओ। So you can install any ISO, हाँ, आपको जो करना है कोई भी आप कर सकते हो। इसमें से कोई छोटा वाला डाउनलोड करो ISO। फर्स्ट वाला ही। बट इज इट ISO फाइल? क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? हाँ, देख ले कोई भी, अपने को ISO फाइल चाहिए। मैम लिखा तो नहीं है यहाँ पे कोई तो ISO। क्लिक करके देख, अगर डिस्क इमेज फाइल है मतलब ISO फाइल होगी ना। वो मोर इन्फो बोल रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे कि डाउनलोड लिंक है क्या? या डाउनलोड हियर। हाँ, हाँ इसमें से मैम ISO डाउनलोड करो। फर्स्ट। क्या? हाँ, so as you can see it is like I think 400 MB or something. Now this ISO is getting downloaded in your virtual machine. इसको सेव करो, save this. ओके, जब ये सेव हो जाएगा आप क्या करोगे? आप अपने वर्चुअल मैनेजर में जाओगे, वर्चुअल मशीन मैनेजर में, वहां पे न्यू VM क्रिएट करोगे। एंड व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्चुअल मशीन, एट दैट टाइम यू विल सिलेक्ट दिस ISO फाइल। सिंपल, ठीक है? तो जो प्रोसेस हमने विंडोज पे किया यूजिंग वर्चुअल बॉक्स, द सेम प्रोसेस नाउ वी आर डूइंग ऑन द वर्चुअल मशीन, ओके, यूजिंग KVM। तो ये करने के बाद आपका सेकेंड प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। आइडियली योर वर्चुअल मशीन शुड वर्क, ओके, बट इन माय केस आल्सो आई कुड डाउनलोड इट बट इट वाज नॉट रनिंग। एंड इन केस ऑफ आविष्कार एंड सौम्या, वहां पे उनका तो आई थिंक डाउनलोड हैंग हो रहा है। So let's see what happens with Vinny. But this is what your second practical was all about. I hope the concepts are clear to everyone. Ma'am, so Yes. technically we are installing a virtual box inside a virtual box, right, ma'am? Correct. Okay, ma'am. So not virtual box, hypervisor. You should always call it as a hypervisor. Okay, ma'am. So KVM is also one hypervisor. VirtualBox is one hypervisor. VMware is a hypervisor. VMware ESXi is a hypervisor. तो hypervisor का मतलब क्या है? That helps us to create virtualization. Okay, so and ये जो सारे these are multiple vendors या multiple companies है. Okay, जैसे Oracle का अपना VirtualBox है, then VMware है, then Microsoft का दूसरा कुछ होगा. So something like that. So you should, the technical term which is used is hypervisor. Okay. Some people uses Mac and they are facing a problem. वो देर मतलब वो फाइल डाउनलोड कर रहे VM virtual box नहीं, I didn't get you. Sorry. नहीं दे रहे इंस्टॉलेशन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है Mac machine पे? हाँ मैम, कुछ लोगों का। हाँ, तो उनके लिए I don't know because there you see अभी Mac का प्रॉब्लम ये है कि
वहां पर काफी सारे कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, राइट? सो आई एम नॉट श्योर, for that they will have to search that which hypervisor is compatible, as in virtual box काम करेगा कि नहीं करेगा, that they will have to figure out. Ma'am, while creating the virtual machine, I'm following the video. We are asked to like allocate some space for the virtual machine, but the storage space is exceeding in all cases. Which Yes, step? ma'am. Same, ma'am. Like means like I have allocated it 12 GB, ma'am, but over here it's showing that only 2 GB is free. No, ma'am. Only 1 GB is free now, ma'am. नहीं, तुम कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? Ma'am, Step Why? like 4 of 5, creating a new virtual machine. Like I've अच्छा अच्छा, installed ओके. the Puppy Linux ISO. I've downloaded it. I've हाँ created like given the path, and then we are while enabling the storage for this virtual machine, हाँ. we have to create a Okay, let's disk see. node. Okay, 1 second, let's see. विनीत, इसको स्टार्ट करो. Go to virtual, इसे नहीं, virtual manager स्टार्ट करो. मैम कहाँ? अरे तुम्हारे इसमें था ना उबुंटू में वो वर्चुअल मशीन मैनेजर, नीचे स्क्रॉल करो. ये बोल रहे हो क्या मैम? नहीं भाई, उबुंटू में जा, वीएम में जा. ये जो 9 डॉट्स है वो मेनू वाला, उसके देख, उसके ऊपर कहीं पे छुपा होगा वो. Ma'am, if we don't install the virtual box software, हाँ. any other drive, then see will there be any problem, ma'am? No, you can use VMware also. Okay, Anything ma'am. which is हाँ. Okay, ma'am. हाँ. Because I faced the problem, ma'am. वो जगह नहीं है तो इसीलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया था You space मैम can का. दिस वन use. ना? हाँ, so यहाँ पे न्यू मशीन क्रिएट करो, न्यू VM. हाँ, न्यू वर्चुअल मशीन. Now, yes, 1 second. Local media, हाँ, forward. Next, forward, हाँ. अभी तुम्हारा जो डाउनलोड हुआ है ना ISO, उसको ब्राउज करके सिलेक्ट करो यहाँ पे. ब्राउज लोकल, डाउनलोड्स में होगा. अच्छा, 1 मिनट है. कहाँ है डाउनलोड्स? 1 मिनट. तुम्हारा वो गया होगा तुम्हारे इसी अंदर ना, विनीत वाले फोल्डर के अंदर गया होगा. इधर जाओ, पीछे विनीत में जाओ, इधर मीडिया, दिस साइड विनीत में जाओ. मैम उसी में थे अभी. उसके प्रॉपर्टीज में जा, राइट क्लिक कर और प्रॉपर्टीज में जा. किधर राइट क्लिक करूँ? 1 सेकेंड, ये इधर जाओ, फाइल सिस्टम रूट में. क्या नहीं, ये क्या विनीत है? पे, वो विनीत पे जा पहले और राइट क्लिक कर. यहाँ पे इस फोल्डर पे. सी व्हाट हाँ, हैज उस पे ही. हैपेंड, तुमने जो डाउनलोड किया ना वो चला गया विनीत के अंदर, और अभी तुम ये शायद CCL वाला एक्सेस कर रहे हो. सो हाउ टू गो देयर? ये क्या है? ये कौन सा उबुंटू है नीचे? नहीं, दिस इज द फाइल. नो, नॉट दिस. एक काम कर, गो टू योर ब्राउजर. वेट, उसको कॉपी कर लेते हैं. फायरफॉक्स पे जा. डाउनलोड में देख, शो हाँ, ओपन दैट दिस लोकेशन, वेयर एग्जैक्टली इट इज. इट्स इन डाउनलोड्स. आई नो, बट ये डाउनलोड्स तुम्हारा विनीत वाला डाउनलोड्स है ना, हाँ और अभी हम लोग CCL वाले यूजर में हैं, समझा? राइट. सो वी विल हैव टू चेंज द यूजर. इसे कॉपी करके डेस्कटॉप पे डालो. तो जस्ट कॉपी दिस एंड पुट ऑन डेस्कटॉप. एक बार वीडियो रेफर करना मैंने कैसे एक्सेस किया था. ऑब्वियसली द सेम थिंग मस्ट हैव हैपेंड विद मी आल्सो. जस्ट सी हाउ टू सिलेक्ट दैट. Students, start writing your roll number and name in the chat box in the meantime.
सबसे लास्ट स्टेप में जाओ ना, एंड में जाओ। हाँ, इसके बाद देखो कैसे किया था, थोड़ा फॉरवर्ड कर। अदर लोकेशंस में गए आप? नहीं, वो मैं no, even I was figuring out कि कहाँ पे है, then I did something, अब मुझे याद नहीं आ रहा what I Same you told me just now. did. हाँ, And you copy pasted it. हाँ, but how did I access it? Yeah. नहीं ना, that अच्छा, okay, I changed the user, right? See, हाँ 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 हाँ, follow this, हाँ, जो मैंने किया था, समझा? No, ma'am, you tell me. Virtual. हम कैसे चेंज करना है यूजर? थोड़ा बैक जाना, जस्ट थोड़ा पीछे, वीडियो में पीछे जाओ। एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग योर रोल नंबर नेम डजंट मीन दैट यू हैव टू लीव, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा यहाँ पे एक बार वापस चेक कर कैसे किया था। अदर लोकेशंस ओनली, आई थिंक। अदर लोकेशंस कंप्यूटर, देन Home. होम। ओके, पॉज, हाँ, गो बैक, या अदर लोकेशंस कंप्यूटर, होम, Home. या एंड देन In Vinny. विनीत, करेक्ट, विनीत के डेस्कटॉप पे होगा वो, या फिर डाउनलोड्स में। नाउ इट इज प्रेजेंट एट टू प्लेसेस ना। हाँ, सिलेक्ट, कॉपी कर दूं ना? कॉपी नहीं, इसको डबल क्लिक कर, आई थिंक सिलेक्ट हो जाएगा ना। हो गया मैम सिलेक्ट। वर्ड मैनेजर में नहीं गया क्या वो? गो टू योर वर्चुअल मैनेजर, 1 second। Here we have to select ना बाबा, तुम कहाँ पे select किया उसको? यहाँ पे जाओ अदर लोकेशंस में। हाँ, विनीत के अदर लोकेशंस, देन कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर, देन होम, विनीत, एंड डाउनलोड, हाँ, ओपन, हाँ, राइट, 1 second, हाँ, फॉरवर्ड। अभी देखो कुछ एरर आता है क्या? तो यू मस्ट सिलेक्ट एन ओएस, सिलेक्ट तो किया, can't find operating system, choose the operating system you are installing। अच्छा, ओके, यहाँ पे चूज करो, लिनक्स चूज करना पड़ेगा शायद, none detected, click on that। अच्छा, ये करो, इसको अनचेक करो, ऑटोमेटिकली को अनचेक कर। हाँ, यहाँ पे लिनक्स डालो, हम इसमें से कौन सा लेना है? एक एनी, कोई भी एक लेके देखना कुछ एरर आता है क्या। आगे जाओ, फॉरवर्ड। हमने तो वीडियो देखो क्या? वहां पे मुझे कुछ अप टू 971 MB अवेलेबल ऑन द होस्ट। ओके, फॉरवर्ड कर। नेक्स्ट, फॉरवर्ड।
Not enough, please क्या बोल रही है? The The requ- requested volume capacity will exceed the available pool space when the volume is fully allocated. 480. 2048 requested capacity and you only have monthly 45 available. Okay. Go back, एक बार OS change करने की कोशिश करो. Okay, वहाँ पे तू check कर because what OS you have selected ना, depending on that वो capacity मांगता है. मैम वीडियो देखो क्या एक बार आपने कौन सा OS? Selected OS. अभी हमने जो Oracle Linux select नहीं किया ना. मैम, वहाँ हाँ. पे जेनेरिक ओएस करने का होता है क्योंकि पपी लिनक्स को लाइक उतना लाइक हाँ, ये नहीं उतना है और required नहीं है. That is what हाँ I'm लाइक telling him. हाँ. किसको पता नहीं तो वहाँ पे लिखने का मैम जी जेनेरिक करके ये डालो जेनेरिक डिफॉल्ट डिफॉल्ट हाँ, डिफॉल्ट वो लिनक्स के अंदर भी वो कभी कभी नहीं आता। ये अनचेक ही रहने दो ना, हाँ, हाँ, that will be वन चेक ही unchecked. होने दो और अभी देख। और ये इतना ही है ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, अच्छा ये इसको चेंज भी कर, कम कर, ये हाँ इसको छोटा करो. कम कर 20 इसको GB is not required. Just 2 GB keep. कर हाँ. या फिर 1.5 ही रख वरना क्रैश कर देगा। Because it is saying ना 2.2 GB available. So just keep 1 GB. मैम यहाँ पे मेरे को तो लाइक 1 GB से भी कम दिखा रहा है मैम अवेलेबल हाँ. स्पेस। इसके लिए मैम शायद वो फिर वहाँ पे अटक रहा है। चल ना इसका देखते हैं होता है क्या. करो. या ओके ठीक है नेक्स्ट. लोकेशन ऑफ दिस स्टोरेज हाँ. ओके 971 MB था ना। चलो. हाँ. सिलेक्ट सी अभी क्या हो रहा है वो तुम्हारा पपी लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है. आविष्कार म्यूट करना प्लीज. हाँ. अभी समझा ना what you are trying to do. You are trying to install that puppy linux on top of your ubuntu using kvm. ठीक है. अब वो रन होना चाहिए. देखते हैं क्या होता है. ओके Okay, what about other students? Heyman, roll number 42. आपका हुआ? Ma'am, my PC is hanging due to the Ubuntu. Okay, because of the virtual box. Yeah, Okay. क्या है तुम्हारे तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो कि डेस्कटॉप यूज कर रहे हो? laptop. कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 8 GB RAM, ma'am. तो फिर हैंग क्यों हो रहा है? मैम 3 मैंने Ubuntu इंस्टॉल किए इसमें। क्यों 3 किए? एक का काम था 3 क्यों किए? नहीं, पहले 2 किए थे, उसमें फिर एरर आ तो गया। जिसका काम नहीं है वो सब डिलीट करो और डिलीट फाइल्स बोलो. डोंट बर्डन योर सिस्टम. ओके। जो वीएम का जरूरत नहीं है उसको डिलीट करते जाओ. बिकॉज व्हेन यू क्रिएट वर्चुअल मशीन दैट आल्सो क्रिएट्स इट्स रेसिडुअल फाइल्स. नो, तो फालतू आपका वो मेमोरी ऑक्यूपाइड रहता है. ओके। See whether your VM is created. Delete. मैम नहीं है मैम, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। I think मेरा भी इतना ही हुआ था. I think so. ये आया मतलब आई गेस इट इज क्रिएटेड. It is created but it is not running. It is not installed properly. See, otherwise Puppy Linux का ना अपना खुद का एक UI है. I mean जैसे हम लोग Ubuntu इंस्टॉल करते हैं कैसे उसका प्रॉपर UI दिखता है, तो Puppy Linux का भी है. So that is not visible. And also if you will see in my video when I run the last command, okay, so that shows me paused. It doesn't show me running. That means the मतलब I tried to create the VM but then it was not installed properly or successfully. मैंने भी ट्राई किया ना, मुझे भी एक स्टेट पॉज्ड ही आ रहा है. हाँ. So there somewhere some problem is happening. Maybe we are not installing it properly or what, I don't know. यहाँ पे करके देखो system list. Check see the last step. PDF में जाओ.
PDF का लास्ट स्टेप, पर तुम्हारा भी तो इंस्टॉल नहीं हुआ ना, वो प्रॉपर GUI दिखना चाहिए. Yeah, so as you can see here, sudo virsh the virtual state list all जब हम करेंगे, so whichever virtual machines are there, उन सबका नाम दिखाता है जो whatever we have installed, and the state is running. So for me the state was paused. See what comes in your. What is the second, वो VM के virtual manager के दो dots है वहाँ पे. What is the second thing which is open? हाँ, उसपे दूसरा दूसरा कौन सा ओपन है? अच्छा ये रहा. क्लिक दैट द फर्स्ट विंडो, वाइट वाला विंडो. पॉज दिखा रहा है. उस पर राइट क्लिक करके देख, कुछ होता है क्या? रिज्यूम. हाँ, रिज्यूम करके देख. एरर. एरर क्या बोल रहा है? एरर अनपॉजिंग डोमेन, इंटरनल एरर, अनेबल रीसेटिंग टू. द वर्जन. रीसेट करके देख. चल ठीक है, एनीवेज जस्ट ट्राई करना कि ये रनिंग स्टेट में जाता है क्या. बट दिस इज वेयर इवन देन आई लॉस्ट माय पेशेंस. फिर मैंने इसको भी आई स्टॉप्ड हियर बिकॉज इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. यहाँ पे शट डाउन करें कि यहाँ पे ऊपर पावर बटन है, वो पावर बटन दबा. ये वाला हाँ, शट डाउन द वर्चुअल मशीन. एरर आ रहा है. ओके, क्लोज इट. और इट इज नॉट इंस्टॉलिंग प्रॉपर्ली. मैम ये वाला आता है कि ब्लू कलर का. ये तो सर ने विंडोज सेटअप किया था. हम पपी लिनक्स सेटअप कर रहे हैं ना. बट हाँ. वॉट एवर इट इज, जो भी हम लोग सेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उसका एक प्रॉपर GUI आता है. Anyways, ठीक है. Just at least you people understood these steps, no? This is what we had to do. Okay, so even if the last step is not running, but that is still fine, not a problem. Okay, so end में the things should get the ISO should get installed properly. There should be a new virtual machine which should be installed, and उसका output should be running. That is what is our last step, which is not happening here. एक काम करना विनीत, वो वर्चुअल मैनेजर तेरा पूरा बंद करके वापस एक बार स्टार्ट करके देख होता है क्या, एंड जस्ट सी वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट. इसको क्लोज कर दे, क्विट टू विंडोज बोल दे. या देन अगेन स्टार्ट इट एंड सी वापस अगर इंस्टॉल करते हैं तो होता है क्या. अरे वहीं से डाल देगा ना, टर्मिनल में वर्ट मैनेजर लिखोगे तो आ जाएगा. Oops. ये क्या नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है? इसको पहले कनेक्ट, नीचे जाओ, केमू में क्या दिखा रहा है? नॉट कनेक्टेड. राइट क्लिक, डबल क्लिक टू कनेक्ट करो. न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँ क्या? हाँ, वो करके देखना. बट ये नॉट कनेक्ट, ये कनेक्टेड होना चाहिए ना. योर KVM शुड स्टार्ट वर्किंग. ये जो केमू KVM के आगे नॉट कनेक्टेड लिखकर आया है, दैट शुड बी द. वो ऐड कनेक्शन क्या था? फाइल में जाओ, ऊपर फाइल, ऐड कनेक्शन. अच्छा ओके, नहीं नथिंग, इसे कैंसिल करो. नॉट बस. ठीक है, लेट इट बी. स्टॉप शेयरिंग. मैम यस आविष्कार. Who's talking? हाँ, yes राहुल. मैम तो वर्ट मैनेजर कमांड रन करना पड़ेगा वो वर्चुअल बॉक्स कनेक्ट करने के लिए. हाँ, उसने डायरेक्ट ओपन किया ना, इसलिए नहीं हो रहा होगा. विनीत वहाँ पे वर्ड मैनेजर के थ्रू उसको ओपन करो तो वो दैट केमू थिंग विल बी कनेक्टेड. टर्मिनल में वापस कमांड डालना पड़ेगा क्या? हाँ, वर्ड मैनेजर वाला. Yes, Harshal Bore, are you there? Vikas,
Kshitij, Yes, ma'am. Yes, ma'am. share your screen. Kshitij, Kshitij, please share your screen. Ma'am, I am on phone, ma'am. तू फोन में है या तू मार्केट में है? इतना बैकग्राउंड नॉइस क्यों हुआ तेरे पीछे? मैम पापा पूजा कर रहे हैं घर पे. अरे गाड़ियों की आवाज आ रही भाई मेरे को. अच्छा, एनीवेज, व्हाई ऑन फोन? ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना क्षितिज? एंड हाउ मच हैव यू कंप्लीटेड फॉर दिस प्रैक्टिकल? टेल मी. मैम वर्चुअल बॉक्स ही इंस्टॉल नहीं हो रहा है. माय सिस्टम इज वेरी ओल्ड. तो क्या करने का फिर? प्रैक्टिकल तो तुम्हारा परफॉर्म ही नहीं होगा फिर ये सब्जेक्ट है. तो तुम लॉग इन करके क्या करते हो? सिर्फ स्क्रीन को देखते रहते हो? मैम वी आर प्लानिंग टू टेक अ न्यू लैपटॉप. ओके. हर्षल मोरे, Yes, ma'am. या बताइए. Ma'am, आप I don't have laptop. यू डोंट हैव लैपटॉप, तो फिर कैसे करने का सब्जेक्ट के लिए? यू Ma'am, हैव डेस्कटॉप? no, ma'am. Ma'am, I borrow from my friend. But then for this particular subject you will require to something. आप execute कैसे करोगे? नहीं तो not only for this subject, otherwise also आपका mini project है, आपके सारे subjects आप पढ़ाई कैसे करोगे फिर? Ma'am, actually, I do it from mobile only most of the time, unless it's necessary for laptop. Then I borrow him, but I have some time constraints. हाँ, Like but then at for this, for at least अभी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी ना. आपका मिनी प्रोजेक्ट वगैरह थोड़ी फोन पे काम करेगा. yes, ma'am. Not. Yes, roll number 66, Moksha, are you there? Roll number 66. For today's practical, I'm not giving attendance, students, because it was a very क्या कहते हैं, pathetic performance from the class. Okay, you people did not execute. You Ma'am, people were not interactive. Yes. ma'am, my laptop got hanged while using virtual machine. आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Ma'am, 4 GB RAM. 4 GB पे यार बहुत स्लो हो जाएगा, पता है, बिकॉज 4 GB पे ऑलरेडी यू हैव सो मेनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम. ऑन टॉप ऑफ दैट यूजिंग VM वो आपके मशीन को काफी स्लो कर देगा. मैम 4 GB पे उबंटू नहीं चल रहा है, रन ही आई नहीं हो नो, रहा. आई नो. So that problem will happen. ठीक है. सी फॉर द फर्स्ट टू प्रैक्टिकल्स मेनली वी रिक्वायर वर्चुअल बॉक्स और VMware. एक काम करो, या फिर वर्चुअल बॉक्स हटा के VMware डाल के देखो, बट देन स्टिल पुट एनी हाइपरवाइजर दैट इज गोइंग टू स्लो डाउन योर मशीन. From the fourth practical onwards, anyways, we have to work on AWS, so this problem will not happen. Just see if you can manage to complete at least. अगर आप एक बार पूरा एग्जीक्यूट करके देख पाते हो, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, then also it is fine for the first and the second and the third practical, because fourth practical onwards we anyways have to work online AWS पे. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay, ma'am, I will try. Yes. Ma'am, Yes. my virtual machine status was running. Can you please share your screen and show me? Yes, ma'am. So you followed the same steps, no? Yes, ma'am. Okay. ये स्क्रीनशॉट्स लेके रखना, हाँ, बिकॉज यही आपको फिर आपके सबमिशन में डालना पड़ेगा. VM2 रनिंग, बट तुम्हारा वो इंस्टॉल हो गया क्या? वर्चुअल मैनेजर दिखाओ. ओके, गुड. ठीक है. बट देन यहाँ पे तुम्हारा पपी लिनक्स का स्क्रीन तो नहीं आया. वो नहीं आ रहा मैम. हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एक्चुअली कैसे होना चाहिए ना, यहाँ पे तुम्हारा वो OS दिखना चाहिए. ये तो रनिंग है, दैट मीन्स योर वर्चुअल मशीन इज रनिंग,
बट जो वर्चुअल मशीन के अंदर वट एवर ISO यू इंस्टॉल्ड एंड यू जो तूने कॉन्फ़िगर किया था ना, दैट शुड ऑल्सो बी विजिबल. जैसे राइट नाउ वी आर यूजिंग Ubuntu on VirtualBox. Okay, so the same way you should be able to use Puppy Linux on KVM. Okay, something like that. But ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना तो फॉर योर सबमिशन डॉक्यूमेंट. ओके, Okay, madam. ऑलराइट, ठीक है. So students, today's attendance will not be given. It will be given. I'll see students who only interacted with me, सिर्फ उनको मिलेगा. For others, the attendance will not be given for today's lecture. Okay, please tell in your class. Thank you.